Good morning, everyone. सभी को मेरा नमस्कार. चलिए आगे पढ़ेंगे आज. Read about water. So water is the most important nutrient in our body for survival. Without which this chapter is a pure waste of time and paper. Water is the primary transporter of nutrients in the body. Without water, you can't use the nutrients that come from carbs, protein, and fat. About 70% of the human body is water. We can survive up to 5 weeks without food, but less than 5 days without water. People who were stuck inside Taj Hotel during the recent terrorist attack resorted to drinking water from the AC duct. Our lifestyle is dehydrating. Really? We consume too much of processed food, drink too many teas, coffees, and wines, not to mention the aerated and the non-aerated sugary drinks. Even a small drop in the water content of the body lowers our blood flow to get the kidneys and heart overworked. This increases the sodium content in our blood, which triggers the thirst response. Sadly, most of us drink only enough to quench our thirst or to wet a dry throat, not enough to meet our body's water requirement. So, what is worse? Increase in age, inactivity, and stress dulls our thirst mechanism and also lowers the water reserve in our body. All this together leaves us dehydrated most of the time. Also, a major cause of bloating, by the way. Water and weight loss. Crash dieting takes the biggest toll in the water reserves in our body. Loss of water is one of the biggest issues that I have against crash dieting and its associated guaranteed weight loss. Crash dieting which restrict nutrient and water intake. So don't let anybody fool you that 3 fruits and 6 juices give you your daily feed. Leads to rapid water loss from the body. This on the weighing scale will show itself as weight loss. And on some of the body composition measurement machine as increase in metabolic rate. So this drop in body weight is not reduction of body fat, but loss of an important water. Loss of water impairs circulation. Now you know why stretch marks are associated with crash dieting. Reduces muscle tone, joint and bone health, and obviously overworks the kidney, heart, and lungs. Oh yes, it will also lead to body odor because composition of sweat changes. Losing weight is no big deal. If you lose your body water, bodybuilders and wrestlers routinely adopt this practice. They bring their weight down by as much as 4 kilo on the day prior to a competition. This allows them to compete in a lower weight group and improves their chances of winning. This practice can even lead to death. But bodybuilders and wrestlers have a chance of winning medals. What will you win with rapid weight loss, stretch marks, or chronic fatigue? A dehydrated condition means that our kidney have a hard time metabolizing our waste. We can poison ourselves with the waste that we produce. Water is the agent through which we throw these wastes out of the body. Enzymes, digestion, circulation, even fat loss are slaves to adequate levels of hydration in our body. Muscles will not contract, commonly felt as cramps or dull acts.
Joints will hurt and skin will look dull without water. Ever seen a stress out person's skin? Oh, what am I forgetting? Lungs and heart obviously can breathe or beat without adequate water. In our Bijli Sadak Pani driven democracy, water, water, without doubt in the clincher. Life without Bijli and Sadak can be easily coped with. In fact, some of us city people actually look forward to going to places without Bijli and Sadak for holiday. But can you live without water? No. FYI, trek, which are essentially places without Sadak and Bijli, need to have adequate pani. Places that don't have fresh water, streams, or good quality water do not become popular trekking routes. All camps, all camp and route, a trek are by a water source. Hot water reduces body fat and cold water increases obesity are some of the silliest arguments ever. Water, for heaven's sake, doesn't much more than fat loss. How much water should you drink? Drink enough so that your urine is always crystal clear, not light yellow, dark yellow, or reddish. There are many ways in which water escapes from the body: urine, excretion, sweat, breathing. The only way to hydrate ourselves is by sipping water all the time and by eating wholesome, unprocessed food. So don't want muscle act, joint problem, bloating, obesity, or dull skin. So reach out for water and drink beyond quenching your thirst. In fact, drink water all the time, sip by sip. Swill it in your mouth like a good wine and let it move down your throat into your stomach. Release every sip of it. Water is life. Blessed are those who have good quality water flowing through their taps, through your tap. The next time you feel sorry for yourself, so remind yourself of the biggest blessing that you are enjoying in this life. 24-hour good quality water in your tap. It nourishes your being and makes itself possible. Honey lime water, apple vinegar cider. The two magical drinks which will help people melt fat and get them thin. Really? How come most of our arm junta is still fat? Get off it, people. There is really no magic drink, pill, potion, etc., which will burn fat for you. Honey is sourced from the right place, has medicinal properties. But if you are thinking it without supervision, it can do you more harm than good. Honey being high in fructose is not good for those who are insulin insensitive, have high triglyceride or LDL levels. So do check before you start to have it regularly. It is not right for everyone. Nimbu can actually work against you. For certain body compositions, it can increase headache, acidity, and can create digestion problems. And it is not the richest source. A guava has much more vitamin C than a lemon or an orange. Apple cider, great for cleaning stains
and toilets, but can cause burning in your throat, irritability, and nervousness. The fact that you are supposed to take these magic portions on an empty stomach first thing in the morning expose you to the hazards all the more. Otherwise, honey, limbu, and cider, when used in diluted forms as a part of a recipe, can enhance flavor and taste. So I am not against these foods per se, just against the mentality that is turning them into what they are not. So कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे द फोर प्रिंसिपल्स ऑफ ईटिंग राइट। आज के लिए इतना ही। चलिए इसके ऊपर आगे चर्चा करने के लिए हम डॉक्टर साहब को बुलाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रमेश मिश्र जी हैं। गुड मॉर्निंग भाई ना। वेरी गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट जो है, इसको हम माइक्रो में नहीं ले सकते, मैक्रो में भी नहीं ले सकते, बट लेकिन ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बारे में आलोचना करने जा रहे हैं। यह है वाटर। वाटर, पानी, जो भी बोले, जल, अम्बू, सब कुछ आप बोल सकते हैं। यह है हमारा शरीर का 70% वो एक्वायर करने वाला न्यूट्रिएंट। हम 5 हफ्ता तक कुछ खाना न खाए जी सकते, लेकिन 5 दिन तक वाटर ना ले जी नहीं सकते। ये इतना इम्पोर्टेंट है। ये शरीर का जितना है आवर्जन, जिसको महिला बोलते हैं, जिसको हम अनयूज्ड मटेरियल्स बोल सकते, पॉइजन्स बोल सकते बॉडी के लिए, ये सबको बॉडी से निकलता है। वो निकलता है स्वेट से, टट्टी से, यूरिन से और पर्सपिरेशन। पर्सपिरेशन का मतलब हम जब श्वास लेते हैं, प्रश्वास लेते हैं, तब जो मॉइस्चर निकलता है, इसको पर्सपिरेशन का बोलते। तो ये 4 रास्ते हैं जिससे हमारा बॉडी से वाटर निकलता है। इसीलिए हमको हर रोज, हर टाइम, हर घंटा बोलिए, वाटर को लेना चाहिए। हर घंटा हम 1 गिलास 250 से 300 ml का पानी लेना जरूरी होता है। खाना खाने का 1 घंटा पहले, खाना खाने का 1 घंटा बाद, ऐसा करके हम लेंगे पानी को। दिन में कम से कम 14 से 15 ग्लास पानी लेंगे। जैसा कि हमारा जो यूरिन निकलता है, ये क्रिस्टल क्लियर आएगा। ये स्ट्रॉ येलो नहीं, स्लाइटली येलोइश नहीं, रेडिश नहीं, ये कुछ नहीं, अलग नहीं, क्रिस्टल क्लियर आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वाटर बॉडी से निकाल देते हैं, डिहाइड्रेट कर देते हैं वेट लॉस के लिए। वेट लॉस करने के लिए फैट को निकालते हैं और क्रैश डाइट में वाटर को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ये सही नहीं है। वाटर को रेस्ट्रिक्ट कर देने से कभी कभी ऐसा होता है, हमारा जो डिटॉक्सिफिकेशन के बाद लिवर हमारा डिटॉक्सिफिकेशन करता है, फेज 1 में, फेज 2 में। ये जो निकलते हैं पॉइजनस मटेरियल्स, जिसको लिवर डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिसको लिवर डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता, इसको निकालना मांगता है, लेकिन हम इसको निकालने नहीं देते पानी की कमी के कारण।
तो क्या होगा, ये शरीर में जमा होकर रहेगा और बाद में हमारा किडनी को नष्ट कर देगा। किडनी ये मैला जमा होने के कारण ब्लड में वो जी नहीं पाएगा, नष्ट हो जाएगा। किडनी नष्ट हो जाने के बाद फिर किडनी को रोपण करना जरूरी हो जाता है। मसल फंक्शन भी वाटर का कम होने का कारण कम हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन भी कम होता है। हार्ट का फंक्शनिंग कम हो जाता है, लिवर का फंक्शनिंग कम हो जाता है, डाइजेशन भी कम हो जाता है, हार्मोन सिक्रीशन भी कम हो जाता है, सब कुछ कम हो जाता है। तो इसीलिए हम जब ट्रैकिंग में जाते हैं, सब ट्रैकिंग रूट वाटर सोर्स का नजदीक में है, क्योंकि ट्रैकिंग करने का टाइम पानी का जरूरत होता है और कोई आदमी साथ में 10 किलो 8 किलो 5 किलो ऐसा पानी साथ में लेके ट्रैकिंग नहीं कर सकते। हम बिजली के बिना जी सकते, लेकिन वाटर के बिना नहीं जी सकते। कभी कभी लोग कोशिश करते हैं वो ऐसा एक जगह में घूमने जाए जहाँ बिजली नहीं हो, जहाँ रास्ते नहीं हो, लेकिन कहीं ऐसा जगह किसी ने भी पसंद नहीं करेगा जहाँ पानी का सोर्स नहीं, क्योंकि पानी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो इसीलिए हम पानी के बारे में हरदम सोचना चाहिए, और पानी के बारे में सोचने से सोचने के साथ साथ हम जो वेट लॉस के लिए लेते हैं हनी और लाइम वाटर, ये हमारा कुछ अच्छा नहीं करता, क्योंकि आजकल का जो हनी आता है ये अडल्टरेटेड होता है और फ्रुक्टोज होने का कारण ये हमारा बॉडी का ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा देता है। तो इसीलिए हनी हमको नहीं लेना चाहिए। और नींबू भी सबके लिए अच्छा साबित नहीं होता। नींबू कभी कभी एसिडिटी बढ़ा देता है। और एप्पल साइडर विनेगर ये भी एक डिटॉक्स ड्रिंक है। फिर भी कोई कोई आदमी का ये थ्रोट इरिटेशन करता है, स्टोमक इरिटेशन करता है। आफ्टर ऑल ये तो भी एक केमिकल है ना, बायोकेमिकल हो ना सही, ये भी एक केमिकल है। इसीलिए सबका बॉडी में ये जाता नहीं। तो हमको सोच समझ के डिटॉक्स ड्रिंक चूज करना चाहिए। हम जीरा वाटर ले सकते, मेथी भिगो के इसका पानी भी ले सकते, अजवाइन वाटर भी ले सकते, हम सौंफ को भिगो के भी इसका पानी ले सकते। सुबह सुबह खाली नींबू पानी नहीं लेंगे या एप्पल साइडर विनेगर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम हमारा शरीर को जो सुहाता है, शरीर को जो कोऑपरेट करता है वही लेंगे, लेकिन वाटर ही लेंगे। वाटर को हम सिप सिप करे लेंगे। रुजुता ने बोल रहे हैं सिप बाय सिप, मतलब क्या है, वो पानी को हम खाना जैसा चबा के खाएंगे और खाना को पानी जैसा पीने का कोशिश करेंगे। तो ये हमको बता रहे हैं कि हम वाटर 3 बार लेना चाहिए, हर घंटा लेना चाहिए, जैसे कि हमारा शरीर का 70 भाग जो पानी है इससे कमी न आ जाए। थैंक यू। आज सिर्फ इतना ही। थैंक यू ऑल। नमस्ते।